Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I'm back after the weekend break. I welcome you to lecture number 17 of the series. I do hope that you must have had a wonderful weekend and all your near and dear ones are living a peaceful life. Well, gentlemen, your exam is approaching fast, so I would rather expect you to keep working hard and be ready for it. Well, as far as today's lecture is concerned, in our today's lecture we are going to take up application number 3. Then we are going to make sentences from the pair of words. And lastly, we are going to take up lesson number 4, which is also included in your first term exam. I hope you are ready for it. Well, gentlemen, without wasting any time, let's get started with our lecture today. Well, gentlemen, this is our third application. This is application to principle for the change of subjects. We'll start with the same pattern by writing the principle on up left corner of your page. Government College A.B.C. You can write the word city inside the bracket. It is not compulsory anyhow. Then the subject followed by a colon, application for the change of subject. Now this line carries 1 mark. Dear sir, I beg leave to submit with all due reverence, reverence के मानी होते हैं अदब, एहतराम, that I am a student of FSC Part 1 at your college. I got admission in the college just a couple of weeks back. At the time of submission of my admission form, I decided to take up mathematics, physics and chemistry as a combination of subjects. Now this was the beginning of your application. Now you are going to develop the middle of your application. Now, comma, after studying this combination of subjects for 2 weeks, again comma, I have come to realize that I made a serious mistake in the choice of subjects. Full stop. I have found out that chemistry is a tough subject to handle at this stage. Full stop. In spite of putting in a sincere effort, comma, I have not been able to clear my concepts in this subject. Now, comma, the feeling of uneasiness has started to creep into my mind, which makes me feel convinced that chemistry is not my cup of tea. And this was a good enough middle of your application, जिसमें आपने ये वाज़े कर दिया कि केमिस्ट्री मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है जिसको मैं नहीं पढ़ सकूँगा. Third paragraph, I performed well in computer science in matric class without much effort as I was quite at home in it. Therefore, comma, I would request you very humbly to grant me permission to take up computer science in place of chemistry. Full stop. I feel I can perform much better in my studies, comma, if I am allowed this change of subjects, as I will be more focused and settled mentally. Your considerate response to my request would relieve me of great stress and anxiety with respect to my studies. Considerate के मानी होते हैं हमदर्दाना. The last line is a formality. It is a part of all the applications. I shall be grateful to you for this act of compassion. Compassion कहते हैं हमदर्दी को, शफकत को. Then on the bottom left of your page, yours obediently, in this phrase only y will be capitalized. It is followed by a comma, x dot y dot z. It means it is a name. Then at the bottom of the right hand side of your page, you are going to write date. Dated, colon, July 13, comma, 2020, full stop. This whole line of date carries 1 mark. Keep it in mind, your application ends after the year and the full stop.
Well, gentlemen, this is a very important slide coming your way. In this slide, you are asked to make sentences from the given pair of words with alphabet B. All the pair of words in this slide are extremely important. Some of them you have already read in metric class. So let's start with this slide. The first pair is barren. It is paired with barren. Pronunciation is different. For both the words, barren land produces nothing. Barren is an adjective. It means banjar, beaban. Barren land produces nothing. Banjar zameen kuch nahi ugati, kuch paida nahi karti. My father bought barren piece of land. मेरे बाप ने एक बंजर ज़मीन का टुकड़ा खरीदा. Now the next word which is paired with barren is barren. Barren is also an adjective, can be used as a noun as well. His father is a known baron of our area. Baron कहते हैं feudal lord को, बड़े ज़मींदार को. By the way, there is a very common expression being used these days that this is an era where media barons are in and feudal barons are out, meaning hereby कि आज का ज़माना जो है वो मीडिया का है, ना कि जागीरदारों का है. Next pair is again very important pair, ballot, B-A-L-L-E-T. It is paired with ballot, B-A-L-L-O-T, ballot. You need to differentiate between the two. Ballot with E is a form of a dance, classical dance, very popular in Italy, China and France. We are going to a ballet tonight. हम आज रात बैलेट डांस देखने जा रहे हैं. She is a famous ballet dancer. बहुत मशहूर बैलेट डांसर है, which is a noun. Now ballet, B-A-L-L-O-T, ballet is a noun as well as a verb. I have used it in both ways here. He is elected as president through ballot. वो ballot के ज़रिए उसको सदर चुना गया. Ballot papers have been counted. Ballot paper यानी वोट की पर्चियाँ गिनी जा चुकी हैं. Government should be changed through ballot, not by bullet. The next one, third pair of today's slide, is the most important one of all the pair of words in this slide, bridal. B-R-I-D-A-L, bridal. As you can see, it is an adjective as well as a noun. Please don't get confused. Bridal का मतलब वो अशिया, वो चीज़ें हैं जो कि दुल्हन के इस्तेमाल में होती हैं. जैसे कि आप कहते हैं ब्राइडल ड्रेस, ब्राइडल ज्वेलरी, ब्राइडल शूज़, ब्राइडल मेकअप. लेकिन ख़ुद दुल्हन को आप ब्राइडल नहीं कह सकते, दुल्हन ब्राइड होती है. इसलिए कुछ मैंने ये अक्सर नोट किया है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसा लिखते हैं कि ब्राइडल इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, जो कि बिल्कुल गलत सेंटेंस होगा. ब्राइडल वो अशिया हैं जो कि दुल्हन इस्तेमाल करती है. Bridal dresses are very expensive these days. She has put on the bridal jewelry. Bridal is a noun as well as a verb. Hold the bridle of the horse tight. लगाम को कहते हैं, reins को कहते हैं, घोड़े की, गधे की. reins को, बागों को, लगामों को. Hold the bridle of the horse tight. यहाँ पर ये noun के तौर पर इस्तेमाल हुआ है. नेक्स्ट वन सेंटेंस जो है उसमें मैंने इसको वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया है. यू नीड टू ब्राइडल योर एंगर. आपको अपने गुस्से पर काबू रखने की ज़रूरत है. यू मे ऑल्सो से यू नीड टू ब्राइडल योर टंग. आपको अपने ज़ुबान पर काबू रखने की ज़रूरत है. Now bail and bail, this pair you have read in metric class. The first bail is a noun as well as a verb. ज़मानत, ज़मानत देना. जब ये नाउन है तो इसका मतलब होगा ज़मानत, जब ये वर्ब होगा तो इसका मतलब होता ज़मानत देना या ज़मानत लेना. ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल. उसको ज़मानत पर रिहा कर दिया गया. माई पेरेंट्स ऑलवेज बेल मी आउट ऑफ माई ट्रबल. मेरे वालिदैन हमेशा मेरी मुश्किल को मेरी मदद करते हैं, मुझे मुश्किल से निकालते हैं. बेल, B-A-L-E, बेल नाउन है. देयर वर मैनी बेल्स ऑफ कॉटन प्लेस्ड इन द स्टोर. देयर वर मैनी बेल्स ऑफ कॉटन प्लेस्ड इन द स्टोर. ये बेल भी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप इसको नाउन के तौर पर इस्तेमाल करें. बर्थ एंड बर्थ इज़ रादर अ कॉमन पेयर ऑफ वर्ड. B-E-R-T-H, बर्थ जो वो सीट होती है जो कि आप गाड़ी में बुक कराते हैं,
जिसमें आप सो भी सकते हैं, लेट भी सकते हैं. It is a noun. I got a berth reserved in the train. Birth, everybody knows, is a noun. What is your date of birth? My birthday will be celebrated on Friday. The last pair is also a very important one. Born. Born verb है जो कि bear की first form है. ये by the way passive form में इस्तेमाल हो सकता है, active form में इस्तेमाल नहीं होगा. He was born in a religious family. She was born on Monday. Born. Now this needs to be understood. Bear, bore, born. ये इसका मतलब, ये इसकी forms हैं, ये verb है. Bear, born, bear, bore, born. बर्दाश्त करना. He has borne all the suffering with courage. He has borne all the suffering with courage. Well, gentlemen, I would advise you very strongly to write these pair of words in your register. Many of them will be there in the exams that is coming. Well, students, now we are going to start our lesson number 4 from book 1. As I have already indicated it in the group that this lesson is also included in your term exam that is going to commence on Friday. Therefore, you need to be very careful while I translate the important passages of the lesson. The first paragraph is very important. It has been a part of the previous board exams couple of years back. The title of the lesson is Thank You Ma'am, Mohtarma Aapka Shukriya. Mohtarma Aapka Shukriya, which is written by Langston Hughes. Well, story इस तरह से है कि एक लड़का जिसकी उम्र 16 से 17 साल है, वो एक औरत का पर्स छीनने की कोशिश करता है जो कि रात के वक्त अपने काम से घर लौट रही होती है, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होता और पकड़ा जाता है. क्वाइट नेचुरली वो अब खौफजदा होता है कि उसकी पिटाई होगी, उसको पुलिस के हवाले किया जाएगा, उसके साथ बुरा सलूक किया जाएगा, उसको सज़ा दी जाएगी. लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता. औरत उसको पकड़ती है और घर ले जाती है. वहाँ पर वो उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती है, उसको खाने को देती है, उसका मुंह दिलवाती है और उससे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं करती जो कि लड़के को शर्मिंदा करे या उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करे. लड़का उसके हुस्न अखलाक से बहुत मुतासर होता है और बिलाखिर जब वो उस लड़के को घर से रवाना करती है तो वो उसको कुछ पैसे भी देती है कि इससे वो अपनी ज़रूरत पूरी कर सकता है, और उसको ये एडवाइस करती है कि ज़िंदगी में ऐसा कोई गलत काम नहीं करना जिससे बाद में पछतावा हो और इंसान अपने आप से आंखें भी ना मिला पाए. इस तरह से लड़का जब जाने लगता है तो वो अपने आप में बहुत शर्मिंदा भी होता है, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर रिफॉर्म हो चुका होता है, हमेशा के लिए तब्दील हो चुका होता है, उसका माइंडसेट तब्दील हो चुका होता है. तो इस लेसन का मफहूम ये है, मतलब ये है, एसेंस ये है कि हम सज़ा देकर तो शायद किसी को हमेशा के लिए रिफॉर्म ना कर सकें, उसके जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो उसमें ना ला सकें, लेकिन हम अपने अच्छे रवैये से, हुस्न अखलाक से, बेहतरीन रवैये से किसी को हमेशा के लिए चेंज कर सकते हैं. Well, now it's time to get going with the transition. She was a large woman with a large purse. Large यहाँ पे मुराद है बल्कि heavy. वो एक मोटी औरत थी जिसके पास एक बहुत बड़ा पर्स था. That had everything in it, जिसमें सब कुछ था, but a hammer and nails, सिवाय कीलों और हथौड़े के. It had a long strap. इसका पटा बहुत लंबा था. Strap का मतलब पटा बहुत लंबा था. She carried it slung across her shoulder. और उसने इसे अपने कंधों के गिर्द लटकाया हुआ था. It was about 11 o'clock at night. ये तकरीबन रात के 11 बजे का वक्त था. ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि रात का क्या वक्त था. It was about 11 o'clock at night. ये तकरीबन रात के 11 बजे का वक्त था. Dark, अंधेरा था. And she was walking alone. और वो अकेले पैदल चल रही थी. When a boy ran up behind her. जब एक लड़का पीछे से भागता हुआ आया. And tried to snatch her purse. और उसका पर्स छीनने की कोशिश की. The strap broke with a sudden single tug. पटा उस अचानक से मिलने वाले एक ही झटके से टूट गया. Tug means झटका, jerk, snatch. The boy gave it from behind. जो लड़के ने पीछे से इसे दिया. I repeat, the strap broke with a sudden single tug that the boy gave it from behind.
पट्टा उस अचानक से मिलने वाले झटके से टूट गया जो कि पीछे से लड़के ने दिया. बट द बॉयज वेट एंड द वेट ऑफ द पर्स कंबाइंड, लेकिन जब लड़का और पर्स का वजन मिल गए एंड कॉज्ड हिम टू लूज हिज बैलेंस, और उसका तवाज़न खोने का बायस बने. इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट, टेक ऑफ फुल ब्लास्ट एक ईडियम है, इसका मतलब अंधाधुंध भाग जाने की बजाय, तेजी से भाग जाने की बजाय, एज ही हैड होप्ड, जैसा कि उसको उम्मीद थी. द बॉय फेल ऑन हिज बैक, लड़का अपनी कमर के बल गिरा. ऑन द साइड वॉक, साइड वॉक कहते हैं फुटपाथ को, लड़का अपनी कमर के बल फुटपाथ पर गिरा. एंड हिज लेग्स फ्लू अप, और उसकी टांगें ऊपर कोट गई. द लार्ज वुमेन सिंपली टर्नड अराउंड, वो मोटी औरत महज वापस मुड़ी. एंड किक्ड हिम राइट स्क्वायर इन हिज ब्लू जीन्स सिटर, और उसके नीली जीन्स वाले कूले पर लात मारी, टांग मारी. देन शी रीच डाउन, फिर वो नीचे झुकी. पिक द बॉय अप बाय शर्ट फ्रंट, लड़के को अपने उस कमीज के सामने से पकड़कर उठाया. एंड शुक हिम अंटिल हिज टीथ रैटल्ड, और उसको उस वक्त तक झटके देती रही जब तक कि उसके दांत बजने न लगे, कपकपाने ना लगे. वेल, आई होप you must have got the translation cleared. Well, students, the second paragraph on page number 27 is also very important. Now I'm going to translate. Please listen to it very carefully. Sweat popped out on the boy's face. Sweat पसीने को कहते हैं, pop out होते हैं surface करना, emerge करना, सामने आना. Sweat popped out on the boy's face and he began to struggle. पसीना लड़के के चेहरे से ज़ाहिर होने लगा और उसने जद्दोजहद करना शुरू कर दी, कोशिश करना शुरू कर दी. मिसेस जॉन्स स्टॉप्ड, चर्क्ड हिम अराउंड इन फ्रंट ऑफ हर. मिसेस जॉन्स रुकी और उसको झटका देकर अपने सामने किया. पुट अ हाफ नेल्सन अबाउट हिज नेक, और उसकी गर्दन को अपने बाजू के शिकंजे में जकड़ लिया. हाफ नेल्सन होता है एक बाजू से जकड़ लेना. एंड कंटिन्यू टू ड्रैग हिम डाउन द स्ट्रीट, और उसको गली में घसीटती रही. When she got to her door, जब वो अपने दरवाजे पर पहुंची, she dragged the boy inside, उसने लड़के को घसीट कर अंदर दाखिल किया. down a hall, एक बहुत बड़े कमरे में. and into a large kitchenette furnished room, और फिर एक किचन नमा सजे सजाए कमरे में. at the rear of the house, घर के पिछले वाले हिस्से में. she switched on the light and left the door open, उसने रोशनी जलाई और कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया. The boy could hear other roomers laughing and talking in the large house. लड़का उस बहुत बड़े घर में दूसरे कमरों में रहने वाले लोगों के कहकहों और बातों की आवाज़ को सुन सकता था. The women, some of the doors were open too. कुछ के दरवाजे भी खुले हुए थे. So he knew he and the women were not alone. इसलिए वो जान गया कि वो और औरत घर में अकेले नहीं थे. The women still held him by the neck. औरत ने अभी तक उसको गर्दन से पकड़ा हुआ था. इन द मिडल ऑफ अ रूम, अपने कमरे के वस्त में. आई रिपीट, स्वेट पॉप्ड आउट ऑन द बॉयज फेस एंड ही बिगैन टू स्ट्रगल. पसीना लड़के के चेहरे से जाहिर होने लगा और उसने जद्दोजहद करना शुरू कर दी, कोशिश शुरू कर दी. मिसेस जॉन्स स्टॉप्ड, jerked him around in front of her. मिसेस जॉन्स रुकी और उसको झटका देकर अपने सामने किया. पुट अ हाफ नेल्सन अबाउट हिज नेक, और उसकी गर्दन को अपने बाजू के शिकंजे में जकड़ लिया. पुट अ हाफ नेल्सन होता है एक बाजू के शिकंजे में किसी चीज़ को जकड़ लेना, और उसके गर्दन को अपने बाजू के शिकंजे में जकड़ लिया. एंड कंटिन्यू टू ड्रैग हिम अप द स्ट्रीट, और उसे गली में घसीटती रही. व्हेन शी गॉट टू हर डोर, जब अपने दरवाजे पर पहुंची, शी ड्रैग द बॉय इनसाइड डाउन अ हॉल, उसने लड़के को घसीट कर एक बहुत बड़े हॉल में दाखिल किया. एंड इनटू अ लार्ज किचनेट फर्निश्ड रूम, और एक बहुत बड़े किचन नमा सजे सजाए कमरे में. एट द रियर ऑफ द हाउस, घर के पिछले वाले हिस्से में. शी स्विच्ड ऑन द लाइट एंड लेफ्ट द डोर ओपन, उसने कमरे का दरवाज़ा, उसने रोशनी जलाई और कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया. द बॉय कुड हियर अदर रूमर्स लाफिंग एंड टॉकिंग इन द लार्ज हाउस, लड़का उस बहुत बड़े घर में दूसरे लोगों के कहकहों और बातों की आवाज़ों को सुन सकता था. सम ऑफ देयर डोर्स वर ओपन टू, उनमें से कुछ के दरवाजे भी खुले हुए थे. सो ही न्यू ही एंड द women वर नॉट अलोन, इसलिए वो जान गया कि वो और औरत घर में अकेले नहीं थे. द women स्टिल हेल्ड हिम बाय द नेक इन द मिडल ऑफ अ रूम, औरत ने अभी तक उसको कमरे के वस्त में उसकी गर्दन से पकड़ा हुआ था. So the students, this is the last slide of our today's lecture. Paragraph number 3 and the second last paragraph of the lesson here on page number 28 are very, very important. I would advise you to please listen very attentively.
She heated some lima beans and beef she had in the icebox. उसने कुछ लोबिये के बीज और बड़ा गोश्त गर्म किया जो कि उसके पास फ्रीज़र में मौजूद था. लीमा बीन्स लोबिये के बीजों को कहते हैं, बीफ गाय के गोश्त या बड़े गोश्त को कहते हैं. आइस बॉक्स से मुराद है रेफ्रिजरेटर या फ्रीज़र. उसने लोबिये के बीज और बड़ा गोश्त गर्म किया जो उसके पास फ्रीज़र में मौजूद था. मेड द कोकोआ, इससे कोकोआ बनाया. कोकोआ एक नाउन है, इसको आप कोकोआ ही लिखेंगे. बेसिकली ये एक पुडिंग की तरह या कस्टर्ड की तरह या खीर की तरह की एक डिश और स्वीट डिश होती है. इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि वो दूध में चॉप किया हुआ छोटा छोटा चॉप किया हुआ गोश्त डालते हैं. एंड सेट द टेबल, और इसे मेज़ पर लगा दिया. आई रिपीट, शी हीटेड सम लीमा बीन्स एंड बीफ शी हैड इन द आइस बॉक्स. उसने कुछ लोबिये के बीज और बड़े गोश्त को गर्म किया जो कि उसके पास फ्रीज़र में मौजूद थे. मेड द कोकोआ एंड सेट द टेबल, इससे कोकोआ बनाया और इसे मेज़ पर लगा दिया. द women did not ask the boy anything about where he lived. औरत ने लड़के से कुछ नहीं पूछा कि वो कहाँ रहता था. और his folks, ना ही उसके रिश्तेदारों का मतलब. folks means relatives, near ones और dear ones. और ना ही उसके रिश्तेदारों का मतलब. और anything else that would embarrass him, और ना ही कोई ऐसी बात जो उसे शर्मिंदा कर देती. Instead, as they ate, इसके बजाय जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया, she told him about her job in a hotel beauty shop. उसने उसको होटल पर एक ब्यूटी सैलून पर अपने काम के मतलब बताया. दैट स्टेड ओपन लेट, जो रात देर तक खुला रहता था. व्हाट द वर्क वाज लाइक, और ये कि उसका काम किस तरह का था. एंड हाउ ऑल काइंड ऑफ विमेन केम इन एंड आउट, और कैसे वहाँ पर हर किस्म की औरतें आती जाती थीं. ब्लॉन्ड्स सुनहरी बालों वाली, रेड हेड सुर्ख बालों वाली, एंड स्पेनिश और स्पेन की रहने वाली औरतें. देन शी कट हिम हाफ ऑफ अ 10 सेंट केक, फिर उसने अपना 10 सेंट वाला आधा केक काट कर उसे पेश किया. I repeat, she heated some lima beans and beef she had in the ice box. उसने फ्रीज़र में मौजूद गाय का गोश्त और कुछ लोबिये के बीज गर्म किए. Made the cocoa, इससे कोकोआ बनाया. And set the table, और मेज़ पर लगा दिया. The women did not ask the boy anything about where he lived. औरत ने लड़के से कुछ नहीं पूछा कि वो कहाँ रहता था. और his folks, ना ही उसके रिश्तेदारों के मतलब. और anything else that would embarrass him, ना ही कोई ऐसी बात जो उसे शर्मिंदा कर देती. Instead, as they ate, इसके बजाय जैसे उन्होंने खाना शुरू किया, she told him about her job in a hotel beauty shop. उसने लड़के को एक होटल पर अपने सैलून में काम के मतलब बताया. दैट स्टेड ओपन लेट, जो रात देर तक खुला रहता था. व्हाट द वर्क वाज लाइक, और ये कि उसका काम किस तरह का था. एंड हाउ ऑल काइंड्स ऑफ विमेन केम इन एंड आउट, और कैसे वहाँ पर हर किस्म की औरतें आती जाती थीं. ब्लॉन्ड्स सुनहरी बालों वाली, रेड हेड सुर्ख बालों वाली, एंड स्पेनिश और स्पेन के रहने वाली औरतें. देन शी कट हिम हाफ ऑफ अ 10 सेंट केक, फिर उसने अपना 10 सेंट वाला आधा केक काट कर उसे पेश किया. नाउ द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द lesson, which is important, which happens to be the second last paragraph of the lesson. When they were finished eating, जब वो खाना खा चुके, she got up and said, वो उठी और कहा, no, here take this $10 and buy yourself some blue suede shoes. ये $10 रखो और अपने लिए नीले चमड़े वाले जूते खरीद लेना. Suede shoes कहते हैं leather shoes को. Now here take this $10 and buy yourself some blue suede shoes. ये $10 रखो और अपने लिए नीले चमड़े वाले जूते खरीद लेना. एंड नेक्स्ट टाइम डू नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ लैचिंग ऑन टू माई पॉकेट बुक और एनीबडी एल्स. और अगली दफ़ा ना तो मेरा बटुआ छीनने की कोशिश करना और ना किसी और का. लैच का मतलब होता है पौन सपौन, झपटना, किसी चीज़ पर लपकना, छीनने की कोशिश करना, स्नैच करने की कोशिश करना. पॉकेट बुक का मतलब है बटुआ, वॉलेट. और अगली दफ़ा ना तो मेरा बटुआ छीनने की कोशिश करना और ना ही किसी और का. बिकॉज शूज़ गॉट बाय डेविलिश वेज, क्योंकि बुराई के तरीके से हासिल किए गए जूते. डेविल शैतान को कहते हैं. डेविलिश एडजेक्टिव है, मतलब शैतानी तरीके से. बिकॉज द शूज़ गॉट बाय डेविलिश वेज, क्योंकि वो जूते जो बुराई के तरीके से हासिल किए गए हों, शैतानी तरीके से हासिल किए गए हों, विल बर्न योर फीट, वो तुम्हारे पाँव को जला देंगे. आई गॉट टू गेट माई रेस्ट नो, अब मुझे कुछ आराम करना है. बट फ्रॉम हेयर ऑन इन सन, लेकिन बेटा अब के बाद आई होप यू विल बिहेव योर सेल्फ, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपना रवैया दुरुस्त रखोगे. वेल जेंटलमैन, दैट राउंड्स ऑफ आवर lecture number 17. I hope you are working really hard for the upcoming exam. I wish you all the very best. Take very good care of yourself. Allah Hafiz.